Good evening, everyone. Thanks a lot for staying with us. You're watching Plain Speak with me, Shivani Gupta. It may not be said in as many words, but not much has been left to imagination either. Nitish Kumar will pitch himself as a candidate to take on PM Narendra Modi in 2024. He has said today that he has no such ambitions. But the surround sound around him makes it clear the road to Delhi has been paved for him by his recent switch in Bihar. That would make his partner RJD also happy. When Nitish cedes space in Bihar, Tejashwi can fully take over. At the same time, Nitish also has thrown the gauntlet to Narendra Modi, saying the two-time Prime Minister will not be able to win a third term. Is this all political bluster or more? Can Nitish truly become an opposition prime ministerial candidate amongst so many other contenders? What really is his future and that of his party? In his last-ditch attempt, has he forsaken his party that anyways doesn't have a second-string leadership and faces a threat of breakup, dissolution completely, even from his new ally? Will the opposition accept him, and can they together give BJP a run for its money in 2024? All of these questions in just a bit with our guests. But first, if Nitish has PM aspirations and this is very much his final chance, what works for him and what doesn't? Let's break that down. First up, he is an OBC Kurmi leader which has a pan-India presence. But it is also important to remember that Nitish Kumar or his party doesn't really have that formidable a vote bank that they can call their own. He, as a chief minister, someone who's sworn in for the 8th time in Bihar, has long administrative experience and has also been a union minister. But his flip-flops in Bihar politics have made him unreliable. He's also been branded as an opportunist. He has a secular image, and he can play on that, and that works for the opposition. Their biggest plank is that they have to fight communal BJP. But let's not forget, the warped Indian secularism has lost its electoral might. It doesn't really work in its old avatar anymore in politics. He has a clean image, no personal corruption charge, but he has allied once again with a quote corrupt party, a party like the RJD that he himself had raised objections on over corruption to save his chair. He also comes from the Janta Parivar background with the Samajwadi legacy. That can be a pull for him pan-India. But again, he has allied with a party like the RJD with family politics at its core, and those two are at loggerheads. He's healthy, relatively young at 71 when it comes to Indian politics, but his party is not a cadre-based party. Will he be able to galvanize the country, even if it is with the opposition? Lastly, prohibition and moves like Panchayat quota have made him very popular amongst women. He can also claim to be one of those politicians that has a woman vote bank. But if you really look at it, he has failed to furnish any solid proof of development in Bihar after his first term. So challenging Modi in itself is a tall order. By no means does it look like brand Modi is declining. But even if you could put up a fight, there are too many cooks who could spoil the broth. The famed, elusive opposition unity is nowhere to be seen, and there are just too many claimants to the contender position. And there's no one that is above the pack as it stands. But let's take Nitish and Mamta Banerjee, the West Bengal Chief Minister, as the primary two contenders right now. How do they stack up? Nitish Kumar. Now, he has a larger pan-India personality and appeal, especially in the Hindi belt, which is very crucial as far as national elections is concerned. Compared to that, Mamta Banerjee has very limited appeal outside West Bengal. We've seen the recent efforts that TMC has made. They've not really succeeded the way, for example, an Aam Aadmi Party may have. Now, Nitish Kumar is not an individual winner in his state. This episode is a reminder he needs alliances. He may be the chief minister, but his party is alone not the biggest. Mamta Banerjee, on the other hand, has been beating BJP recently and otherwise, even others, single-handedly. She has greater political heft in that sense. Nitish Kumar can also be seen as a spent force. He would, of course, deny that. His party would deny that. As I mentioned, this is his final chance. Mamta Banerjee, on the other side, is considered very fiery and a street fighter. She is on the ascendancy, some can say, not so much Nitish Kumar. But finally, Nitish Kumar has a clean image. He has no corruption taint against himself, even though his flip-flops have dented that image. Mamta Banerjee, on the other side, over the last few years and even in this term, her image has been dented with several scams under her and her governments. So the big debate that is coming up today, is it not blatant national ambitions behind Nitish's recent switch, but is it going to work for him? We'll take that to our guests in just a bit. What's clear though
again that there is no love lost between Nitish and Prime Minister Modi, as much as people may try to project otherwise. If he had held himself back so far, today Nitish was quite open in his attack on the BJP. Listen. हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, से तो मेरी मित्रता रही है। अब काहे उनको काहे नहीं बनाया, अगर वो बने रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे, आज जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, 20 में क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब हो ही न गया, ये सब तो सब समय पर चलेगा। तो जिस बीजेपी ने आपको 5 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, आपके पार्टी के विरोध के बावजूद आपके नाम का ऐलान किया और आपको मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को आपने धोखा दे दिया। First up, I want to go across to Tarkishore Prasad, who's the former Deputy Chief Minister in Bihar, someone who worked with Nitish Kumar. And of course, that alliance, Nitish Kumar has pulled the plug on it. The new government has been sworn in. Tarkishore ji, you must have heard what Nitish Kumar said after his swearing in ceremony. उन्होंने बोला कि अगर सुशील मोदी रहे होते कैबिनेट में तो ये नौबत नहीं आती। आप उनके साथ अब Deputy Chief Minister रहे थे. This is in a way an attack against you and also the central BJP leadership कि सुशील मोदी को हटा दिया। देखिए, सुशील मोदी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन उप मुख्यमंत्री रहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। एक्चुअली इनकी नीयत साफ तो शुरू से नहीं थी और ये कोई पहली बार तो अलग हो नहीं रहे हैं। 2017 में भी राष्ट्रीय जनता दल से जो अलग हुए तो इन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाह रहा था और कल इन्होंने फिर यही आरोप लगाया। तो ये इनका तो जब इनकी निजी महत्वाकांक्षा के कारण ये किसी घटनाक्रम को अंजाम देते हैं तो इस तरह से आरोप लगाकर फिर ये अपना रास्ता तय करते हैं। निजी महत्वाकांक्षाओं के बारे में जो आपने बात करी मैं उस पर आऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार ने एडिशनली ये भी कहा कि वो तो बनना ही नहीं चाहते थे चीफ मिनिस्टर 2020 में, वो तो बीजेपी ने प्रेशर किया इसलिए बना दिया। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा था कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते थे। तो उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अब 2022 में वो ये बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2020 में चुनाव लड़े और फिर ये संजोग से वो तीसरे नंबर पर चले गए तो फिर उन्होंने हमारे एनडीए सरकार का नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इन्होंने कहा जरूर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नेतृत्व सौंपा क्योंकि लंबे वक्त तक इनके नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को एक नई दिशा दी है और इसके कारण उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को स्वीकार किया। और ये कोई दबाव में काम थोड़े ही करते, कल उनको हटना था तो हटे। हम लोग तुमसे आग्रह भी किया था कि हम सब आपके नेतृत्व में बिहार का विकास करना चाहते हैं। जो जनादेश है बिहार के मतदाताओं का, उस जनादेश के आलोक में हम सब बिहार को, जो आत्मनिर्भर बिहार का हम सबों ने लक्ष्य लिया, उसको पूरा करेंगे। तो हुआ क्या? अब तारकिशोर जी, सवाल तो यही बन रहा है ना कि हुआ क्या? सुशील मोदी ने काफी बातें बोली है। एक तो उन्होंने ये बोला है, नीतीश कुमार ने काफी बातें बोली है। एक तो सुशील मोदी वाली बात बोली, उन्होंने ये भी कहा, उनकी पार्टी बोल रही है कि मुझे ह्यूमिलिएट करा जा रहा था स्टेट यूनिट के द्वारा और बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो बहुत सारे रीजंस बता रहे हैं वो। नहीं, देखिए आपने 3 बातें कही है, एक का मैंने तो जवाब दिया है। हाँ।
दूसरी जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी उनको क्यों कमजोर करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो अपने जो सहयोगी दल हैं उनको चाहेगी मजबूत करना, क्योंकि हमें जब सरकार चलानी है तो हमारे सभी जो घटक दल हैं वो मजबूती से हमारे साथ रहेंगे तो बिहार के बेहतरी के लिए आवश्यक है हम ज्यादा बेहतर काम कर पाए। और ऐसी बात रहती तो हम भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाती। वेल दैट इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, बट ये सब कुछ जो हुआ है उसमें आप ये तो एक्सेप्ट करेंगे ना कहीं तो बीजेपी से भी जो चूक हुई है, आपकी एक और अलायंस टूटी है, आपकी एक और गवर्नमेंट गई है, कहीं ना कहीं तो बीजेपी से भी तो गलती हुई है। नहीं, देखिए हम सब तो पूरे मंत्रिपरिषद में साथ रहे और उनके नेतृत्व में हमेशा हम सब काम किए और हम सबों ने उनके इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई एजेंडा को लागू नहीं किया। जो आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के एजेंडे थे उसी को लागू किया। अच्छा, फाइनली चलिए मुझे ये बताइए, उन्होंने आज ये एक बहुत बड़ी बात बोली कि 2014 में जो जीते हैं वो 2024 में नहीं जीतेंगे। उन्होंने एक तरह से पीएम मोदी पे डायरेक्टली अटैक किया है। उनकी पार्टी भी ये बोल रही है कि नीतीश एक तरह से 2024 की लड़ाई लड़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई, लोकसभा की लड़ाई। उस पे आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, देखिए जो पार्टी 2000 से कहीं न कहीं समता पार्टी के रूप में और कई रूपों में एनडीए का नेतृत्व किया और एक बार वो महागठबंधन का भी नेतृत्व किए। बिहार में अभी तक जनता दल यूनाइटेड अपने बूते कभी सरकार बनाने में सक्षम नहीं हुई और वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसको पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है और भारत को उन्होंने गौरवान्वित किया है। भारत के विकास में भी जो सतरंगी इंद्रधनुष नरेंद्र मोदी जी ने जो खींचा है उसकी पूरी दुनिया और पूरा देश तारीफ कर रहा है। समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं उनके घर तक पहुंचाई और एक नई सोच के साथ बिहार को पूरे वैश्विक कैनवास पर भारत को स्थापित किया है। तो और इस तरह के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी टिप्पणी करना उन्हें शोभा नहीं देता जब वो अपने बल पर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं अपने दल के ताकत पर। तो ऐसे व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनने का उनका ख्वाहिश है तो फिर जिनके साथ हैं उनके नेताओं को तय करना है कि आने वाले दिनों में उनकी क्या स्थिति रहेगी। हाँ। जो 2024 का चुनाव होगा उसमें कौन कौन दल की क्या स्थिति रहेगी, उनके कौन उम्मीदवार रहेंगे, ये सब तो भविष्य के गर्व की बात नहीं। ये आज भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत से all of this will be decided by the opposition. एनडीए की सरकार And it is obviously, that is the biggest thing. It's not very clear exactly what happens as far as that prime ministerial candidateship is concerned. But I leave it at that. Tarkishore ji, you have responded to, of course, his jibe against Prime Minister Narendra Modi. I leave it at that. I do thank you for joining us. But I do want to open this up to the debate now. The intentions and the aspirations of Nitish Kumar and whether they're going to come true or not. Nikhil Anand is spokesperson of Bihar BJP. Shilpi Arora is from the Congress party. Rajiv K. Singh is leader of the JDU joining us. Manisha Priyam, political analyst. Sanjay Kumar, professor and former director CSDS. And Manojit Mandal, spokesperson of the TMC that obviously has its own hat as far as the prime ministerial race is concerned, are joining us on the show. And many thanks to all of you for your time. Manisha Priyam, let me come to you first up. The language, the demeanor of Nitish Kumar today, do you think he has effectively sounded the bugle for 2024 and pitched himself, even if he denies that he doesn't have those ambitions? But that attack, especially on Narendra Modi coming in, that makes it clear, you think? Yeah, I think it does make it clear. And the fact that he's timed it well. Remember, he didn't really have a grouse that was apparent against the BJP. His grouse, as far as we have understood it, is against Shri RCP Singh, who was one of his own partymen, and it was of him fabricating with the BJP or whatever. So to that extent, he's timed it very well because he's waited for what's happened in Maharashtra, and it's after that when he's doing it, then he's sounding as if, look, if the BJP can do this in Maharashtra, it can happen
even with other alliance partners. So in a sense, or this is what the BJP can do in the arena of states. Now, to that extent, he speaks little, he's conveyed a message. It is a Goliath who's standing up to a David. In 2014, maybe Nitish Kumar and Narendra Modi were contenders with equal stature. But today, Narendra Modi is somewhere far ahead in that race. And he's been prime minister now for second term around, over a decade long experience Narendra Modi will have of prime ministership. And Nitish Kumar, if he challenges, and that's a big if, because we don't know what he's going to do in the days to come. Now, one would also like to look at the fact that Nitish Kumar did not let his political plans go out at all. He kept it within himself. Remember, he voted for Srimati Draupadi Murmu ji, who was a candidate of the NDA, of the BJP. He did not go along with Yashwant Sinha ji, who was a joint candidate of the opposition, backed even by the Congress party. Right. So he did not go in then, he comes in now, which means therefore that there was definitely some plan that he had of trying to project himself as a consensus candidate. But all these can only be guesses and inferences from some of the concrete moves Mr. Nitish Kumar has made. He's not a person who gives away anything very easily. But so can he be? Manisha Priyam, let's say he has that ambition and there's nothing wrong with it. Can he be the consensus candidate? I don't know. What I can see in the short run, remember, politics is not such a big run horizon. In the short run, what's going to happen is that in the eastern states, important eastern states of West Bengal, Bihar, Jharkhand, there are going to be anti-BJP governments in place. Also Orissa, which doesn't have such an anti-government, but it has a non-BJP government. So what will happen is that you will have these 4 very important eastern states that will give out a message that there are non-BJP governments here. Now, apart from this, there will have to be a hobnobbing with the other important political leaders. Sharad Pawar is very, very important. TRS is extremely important because KCR, as you know, is a leader from down south of the Vindhyas, but he's also a Hindi-speaking leader. Now, how that pans out, you've got Stalin, who's very important, and in Tamil Nadu, there's a left government that's in place in the state of Kerala. Now, what kind of coalition can be stitched up, what kind of consensus can happen, one does not know at this point of time. But what I can see definitely is that in the eastern part of India, very important states will now say that, look, so many of us are chief ministers and we are all non-BJP chief ministers. Right. The consensus, however, may still elude, because I've just seen that Yashwant Sinha's candidature for presidential race was not a consensus, even though a lot of political parties combined to give him the backing. It had the TMC, it had the left, it had the Congress, it had Sharad Pawar, but you saw how the state government in Maharashtra was toppled soon thereafter. You could see the chinks in the armor. So before, there can be consensus, but any major move that they make, we have to believe that Narendra Modi and the BJP will also have their offensive ready, as you could see. It's not just about the fact that it's not just about the fact that this is a David versus Goliath fight, as you very rightly put, but this is also about the fact that opposition unity has to come. There are no first amongst equals right now as far as the opposition contenders are concerned, and there are many contenders, and one that of course is perhaps ahead of some of the others you've named is Mamata Banerjee. Let me go across to some of our political representatives. Shilpi Arora is from the Congress party. Shilpi, the Gandhis are also a contender, right? Rahul Gandhi is being pitched as the biggest contender against Narendra Modi. The Congress reminds us day in, day out that he's the only one who talks against the BJP and takes them on, and even the RSS. Of course. So will you accept Nitish Kumar? No, it's much more experienced, has greater political heft than Rahul Gandhi. See, it's too early to comment on this. Let the opposition be united and decide whatever they do. Then Congress will react to it accordingly. Like, I know if all opposition is united together, Congress is going to play a very significant role. In fact, Congress is going to be the backbone of that united opposition. But that's no more the reality, Shilpi. No, amongst regional satraps, the feeling is growing that the Congress writ cannot run. And they have shown that. The TMC has shown that. The Aam Aadmi Party has shown that. No, amongst all, if you see, the Congress is the only national party and they are going to play a significant role. There's no doubt about it. And definitely, Bihar is just the example.
You can see the mood of the people. And Nitish Kumar is a very good, what do you call, the weather specialist who can identify that. So, how they formed the government in Bihar, how the results were held wherever the margin was less than 1,000 votes. The results were held, how undemocratically the government was formed in the Bihar. And right now it is a mood of the people. This is mood of the masses. It's not only Bihar. It's going to be all over India gradually, because see, the day is very important. We'll leave that. I'll come to that a little bit later. Whether you can take on Narendra Modi, that's still a long way to go. But you have to still firm up your plans as an opposition. The Congress party can no longer claim to be the big brother. If you want the alliance partners to come together, you'll have to give up a little bit. Are you willing to? Of course, we will be discussing it with our partners, and we'll formulate the strategy. Then whosoever is decided to be the PM candidate, we'll support that. Okay. Be it Rahul Gandhi, be it anybody else. Manojit Mandal, you've got Nitish Kumar throwing his hat. Mamata Banerjee is already there. There is a KCR, there's a Stalin. There's possibly even Arvind Kejriwal. Maybe he wouldn't want to move out of Delhi as a Delhi chief minister just yet. We certainly, at this point in time, do not think about the kind of discourse that you are trying to present about who versus Narendra Modi. For us, at this point in time, what is of cardinal importance is to see the gradual fall of BJP. What it has been doing, it has been done for the last 5-6 years. At least 20 of their alliance partners have deserted them. The biggest of them would be Shiv Sena, Shiromani Akali Dal, and now Mr. Nitish Kumar. That's what is of cardinal importance. But how will you do that? How will you see to the gradual fall of the BJP? They're still on the ascendancy. I'll tell you. It will be a fight between Bharat and Bharatiya Janata Party. But you need a Bharat face. will do. The people of India will do. Manojit Mandal, you're talking in esoteric terms. You still need a face, right? Is the opposition going to be able to agree on a face? I'll reply. Exactly 1.5 years ago, when the Bengal elections were being held, we asked the same questions, right? Did you answer? Did you mean BJP? The BJP's allies? The answer was no. Who versus Mamata? Because they did not have any face. And Mamata won. Here the battle is different. Here the battle is against the policies of Mr. Modi and the BJP government, how they are trying to survive by way of using, misusing, appropriating, misappropriating the government agencies. Even in this case, I won't be surprised even day after tomorrow, ED, CBI, and so on and so forth, they go and bug Mr. Nitish Kumar. I won't be surprised. No, but Manojit, this is the way they were trying to break your political contention parties. against the BJP aside, no individual party, and certainly not the Congress party at this stage, is in a position to take on the BJP alone. So you have to come together if your ambitions have to be realized. That's the only thing I'm discussing. I'm not discussing what your opposition to BJP is. Yeah, the principle that we need to work on and agree on is 1:1 fight. And look at, even if there is, you were talking about the state, there's only one state in this belt and it's tracking from eastern to the southern part where BJP is ruling, and that will probably also go in 2023 if Congress party gets their act together. Okay, JDU. So 1:1 fight. 1:1 fight. But you need a prime ministerial face. We have seen that in Delhi. You mentioned Bengal. When you don't have a big face against a big face, it is almost always a losing fight. All right, Manojit, let me go across to Rajiv K. Singh of the JDU. Rajiv ji, this charge will come against the JDU that, as Tarkishore was saying, you've not been able to form a government in Bihar on your own. How do you even get to prime ministerial ambitions? That too against Narendra Modi, who will be two-time prime minister? Can you come again? I'm saying that how do you even get to this prime ministerial ambition that JDU has and has been talking about Nitish Kumar? कैसे 2024 में वो नरेंद्र मोदी को टक्कर देंगे? सबसे पहले तो first of all I would like to thank you to conducting this debate, and I would not like to comment on Tarkishore Prasad ji's
view, because it is his own view. Every party has ambition, and every political leader has his own ambition, and we as a party, as a JDU, we also have our ambition. And Nitish Kumar has already proven himself. He is a fantastic candidate for Prime Minister. He has everything what a Prime Minister of India should have in, and you can see he has clean image. This is the first point. The second one, I would like to appeal the entire opposition to unite against BJP, and this is the right time. And Nitish Kumar would be the best choice against the Narendra Modi. Secondly, I would like to say that not a single corruption charges in his entire political career. Nitish Kumar was minister in center also, and he is serving as a chief minister of Bihar from 2005. So he has a very clean image, and in India, I think very few political leaders have such clean image like Nitish Kumar. So he has everything that a prime minister should have. नो बट आप करप्शन की जो बात कर रहे हैं, अब वापस वो आरजेडी के साथ चले गए तो वो करप्शन वाला प्लान तो उनका खत्म हो गया ना. अब वो हाई मॉरल ग्राउंड नहीं ले सकते. तेजस्वी के खिलाफ ही उन्होंने करप्शन की बात उठाई थी. नहीं, करप्शन के खिलाफ हम अब भी हैं. वी आर अगेंस्ट करप्शन. आरजेडी के साथ जाने से ऐसा नहीं है कि जेडीयू करप्शन को सपोर्ट करता है. वी आर अगेंस्ट, बट दैट इज स्टिल लोअर इन द टोटम पोल. पहले है नेशनल एम्बिशन, ये तो प्रूव हो गया ना. करप्शन बाद में आता है, करप्शन का मुद्दा नीचे है. पहले ये है कि अपने आप को कैसे ऊपर रखना है. वो प्रिंसिपल से तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया. नो मैम, with this political decision of Honorable Chief Minister Mr. Nitish Kumar ji, the new era of politics has started in Bihar as well as in India. और जहां तक करप्शन की बात है, हमने करप्शन से कॉम्प्रोमाइज ना पहले कभी किया था, ना आगे कभी करेंगे. ये तो बोलने की बातें हैं. जब आप किसी के खिलाफ जाते हैं तो आपके खिलाफ बोलता है. ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा राजीव सिंह सुन के कि आप कह रहे हैं कि करप्शन की तो बस बोलने की बात है. मतलब जो 2027 में बोला, 2017 में बोला नीतीश कुमार ने, वो बस बोलने की बात थी. इनसे तो और उनका जो इमेज है वो खराब होता है. बट एक सेकंड, आपने बोला दी ऑपोजिशन शुड कम टुगेदर. आई डोंट नो, यू हैव योर ऑपोजिशन colleagues sitting here, whether they will do or not. But Sanjay Kumar, I'm coming to you. Is that unity possible? And is that unity possible at all behind Nitish Kumar? Where would you peg him in the race? This is my view. This is my view. Sure. You have posed two questions. One, is unity is opposition unity possible for 2024? There is a big question mark on that. Even before 2019 Lok Sabha elections, we had seen that there have been several photo opportunity when leaders of various opposition parties stood on a platform, and it looked like as if there is going to be opposition unity for 2019 Lok Sabha elections. We already know that how fragmented, it was not badly fragmented, but it was the kind of opposition unity is required for defeating a mighty party like BJP was not seen in 2019. I don't see any sign of opposition unity for 2024. Look at what happened for the presidential election and for the vice presidential election. Yes, there are lots of egos between the leaders of regional party, and that ego is going to come in between when it comes to discussing the name who is going to lead the opposition. So the Nitish Kumar being accepted as the face of the opposition parties or face of the united opposition, that is also that I would put a big question mark on that also. As discussed earlier also, there are various leaders of various regional parties who are very popular in their own state. You can talk about Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal, KCR. Nitish is popular in his own state. So I don't think it's easy. It will be easy for these leaders to accept Nitish Kumar as the consensus candidate. And remember, Nitish Kumar of today is no more Nitish Kumar of 2014 and 15. That was the time when Nitish Kumar's popularity was on the rise. Now Nitish Kumar's popularity is on the decline. Right. 2020 assembly election,
his popularity and Tejaswi's popularity in Bihar was almost equal. And when I say this, this is based on the surveys which we conducted and a very simple question which we asked in that survey. Who would you like to see as the next chief minister? Right. And Tejaswi Yadav and Nitish Kumar were neck to neck. So it's not that Nitish Kumar is still as popular as he used to be, but yes, he still has some advantage, and the advantage is he doesn't come from a dynasty, and he still has a clean image. Okay. I want to go across to Shatrughan Sinha, who's also joining us. Let's see what he has to say as far as this mighty gauntlet that Nitish Kumar has thrown is concerned. Shatrughan Sinha, thanks a lot for joining us here on CNN News 18. I want to begin by asking you, Nitish Kumar today said that 2014 में जो आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बढ़ रही है, लेकिन नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2024 में पैकअप हो जाएगा. क्या आपको लगता है ये सिर्फ कहने की बात है? ऐसा हो सकता है? 2000 माने होने को तो खैर कुछ भी हो सकता है. ये क्या बात कर रही हैं आप? कुछ भी हो सकता है. और एक बात और याद रखें, राजनीति में जो लोग आज हैं वो कल नहीं थे, जो कल थे वो कल नहीं होंगे. ये परिवर्तन चलता रहता है. तो अगर ये कहा है तो उसको उस नजरिए से मत देखिए कि 2014 के लोग 2024 में नहीं होंगे. मतलब कि तब तक बहुत परिवर्तन हो जाएगा. जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो शायद कल नहीं रहेंगे. ये तो जीवन का दस्तूर है. लाइफ जीवन ऐसे ही चलती है, जिंदगी ऐसे ही चलती है, और खासकर पॉलिटिक्स में तो ऐसे ही चलता है. लेकिन जब नीतीश बाबू ने ऐसा कहा है तो मुझे लगता है जिस तरह से परिवर्तन हुआ है और जिस तरह से आज सारे एलआई छोड़ के हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, जिस फैमिली का मैं भी 25, 26, 27 साल तक साथ दिया है मैंने, और हम साथ रहे हैं, मेरी फैमिली रही है वो भारतीय जनता पार्टी, वहां पे सारे बड़े बड़े एलआई देखा आपने कैसे चले जा रहे हैं. यानी चाहे अकाली दल की बात मत करो, शिवसेना की बात मत करो, जितने लोगों ने आपकी खिलाफत की या जितने लोगों से आपका मनमुटाव हुआ वो आपको छोड़ के चले गए अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर. और अभी सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी, सबसे ज्यादा डिपेंडेबल और सबसे ज्यादा बढ़िया इमेज का चीफ मिनिस्टर जो डायनेस्टी से भी नहीं है, वो नीतीश कुमार ने आपका साथ छोड़ दिया. और आज आप नीतीश कुमार के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्हें ठग दिए, वो सगा नहीं और ठगा नहीं और क्या क्या. और नीतीश कुमार के बारे में तो पहले भी आप कह रहे थे उनका डीएनए मांगा था, आप लोगों ने डीएनए बात की थी. नीतीश कुमार ने खुद कहा था भारतीय जनता पार्टी के बारे में बड़का झूठा पार्टी बीजेपी. नीतीश कुमार के बारे में तो उनको पलटू चाचा बोला था. हमारे माननीय नहीं, वही तो आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं. प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? जनता दल यूनाइटेड का मतलब हुआ जनता के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार की पार्टी, समथिंग लाइक दैट. और उन्होंने डीएनए में मांगा था बिहार का. अंत में मिले ना वो. राजनीति में तो लोग रंग बदलते हैं, राजनीति में मैटर ऑफ कन्वीनियंस भी चलता है. आपने वो मिले, आज ये लोग मिल गए. पलटू चाचा बोला तो कल ये यंग डैशिंग डायनेमिक बिहार की इच्छा और अपेक्षा का प्रतीक जो तेजस्वी यादव है, उसने कहा ना कि चलो परिवार में तो होता है, चाचा भतीजा में हो गया, घर घर में लड़ाई होती है. एक लाइन से उसने बात खत्म कर दी. तो ये कोई ना बड़ी बात है और ना ही राजनीति में कोई बुरी बात है. ओके, but can I ask you my second question? You are the TMC MP, but you are saying the most deserving and the most clean image chief minister is Nitish Kumar. Then how will this 2024 battle be decided? Because there are many claimants on who will be the opposition candidate. Will it be Nitish Kumar or Mamata Banerjee? One will have to be picked. अल्टीमेटली फैसला होगा भारत की जनता करेगी और विपक्षी दल मिलकर करेंगे, उनके लीडर्स मिलकर करेंगे. ये हमने ये नहीं कहा कि मोस्ट डिजर्विंग, हमने कहा नीतीश कुमार हैज प्रूवन हिमसेल्फ नाउ वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स एंड अ लीडर ऑफ स्टैंडिंग एंड लीडर विथ अंडरस्टैंडिंग, क्लीन इमेज का आदमी वो है नीतीश कुमार. आज ही comes into the forefront. He is certainly in the front line now as the most desirable candidate, one of the most desirable candidates. Having said this, let me also tell you, the खेला हॉबे किसने शुरू किया? ममता बनर्जी ने. भारतीय जनता पार्टी के हमारे फ्रेंड्स का इतना धन शक्ति का दुरुपयोग
मैन पावर, मनी पावर, गन पावर, गून पावर, क्या क्या नहीं हुआ बंगाल में। उसके बाद उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए रूलिंग पार्टी के, इस कदर जीत के आई वहां से कि आज विश्व में वो रोल मॉडल बन गई हैं। एंड वो सिंपल लेडी ममता बनर्जी, क्वीन ऑफ हवाई चप्पल एंड क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, आज उनका मुकाबला पूरे देश में क्या विश्व में बहुत कम लोग करेंगे। अब वो सामने आ गई। इधर हमारे अपने भाई नीतीश कुमार, जो मोस्ट मैच्योर्ड लीडर, पॉलिटिकली मोस्ट मैच्योर्ड लीडर, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, आज वो सामने हैं। इधर से राहुल की पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज द लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में, एंड कांग्रेस एंड राहुल दे आर डूइंग क्वाइट वेल नाउ। अभी बहुत बढ़िया उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन वगैरह किया, जो हंगामा किया है इन फेवर ऑफ पब्लिक के सपोर्ट में, इश्यूज में बहुत अच्छा किया है। तो अब who will the इनमें opposition से भारत pick? की जनता डिसाइड करेगी। शत्रुघ्न सिन्हा जी, लेकिन इलेक्शन से पहले फेस Opposition डिसाइड pick करना भी- पड़ेगा ना, और इतनी सारी ईगोज हैं, आप सब इन सबके नाम ले रहे करेंगे हैं, ना कैसे डिसाइड होगा? ईगोज इतनी बड़ी बड़ी है। अजी, तो आपको और हमें आपको हमें इतनी चिंता क्यों है? कर लेंगे ना, हो जाएगा ना। 2024 है, अभी तैयारियां होंगी। अभी देखिए, आपको कहते हैं हु विल बी द पिक, ये सवाल तो अब रूलिंग पार्टी में भी जा सकता है। अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी में भी कोई लोग तैयार हो रहे हैं या तैयार हो गए हैं, एक दूसरे दावेदार हो चुके हैं। अब आपको देखना होगा कि मोदी है तो मुमकिन है चलेगा, कि मोदी है तो नामुमकिन है ये भी चलेगा, क्योंकि आपके वहां पे भी काफी अब इंटर क्लैश हो रही है वहां पे। शुरू होगी ये जो सब लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और सेंट्रल पॉलिटिक्स सीम्स टू बी नीतीश कुमार का जाना, और इस तरह जाना। So you are saying this will turn the tide against Narendra Modi? दिस कुड टर्न द टाइड। Okay. जैसे हमने ममता बनर्जी के बारे में कहा कि ममता बनर्जी कुड प्रूव हरसेल्फ एज अ रियल गेम चेंजर इन 2024, उसी तरह से ये टाइड जो है आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात हुई है। बौखलाहट हमारे दोस्तों का, बीजेपी साहब समझ जाइए, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार को, चीफ मिनिस्टर को गालियां दे रहे, इतनी गालियां दे रहे, इतना गलत आदमी था नीतीश कुमार, तो उसके साथ सरकार क्यों बनाई थी आपने? सरकार आपने बनाई, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अब पसंद नहीं आया आपको, उसने एक वाइज डिसीजन लिया, एक टाइमली डिसीजन लिया, और छोड़ के आगे बाहर आपको बिहार के भले के लिए, देश के भले के लिए, और सबसे ज्यादा विपक्ष और देश की राजनीति के भले के लिए। तो अब आपको अचानक नीतीश कुमार बहुत बुरे लग रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। आप तो गालियां पहले भी दे चुके हैं, और क्या क्या नहीं किया आपने। बट शत्रुघ्न जी, तो ये फिर तो साथ सवाल क्यों उठेगा ही आए ना आपने? नीतीश कुमार पे। वो कितनी बार पलट मार चुके हैं, पिछले 10 सालों में 3 बार हो चुका है, और इतनी ऑपोजिट साइड पे पलटी मारी है, ये तो सवाल बनेगा ही नीतीश कुमार पे। बट मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आप इतने सारे लोगों की बात कर रहे हैं जो खिचड़ी बन जाती है ऑपोजिशन में। पहली बात तो ऑपोजिशन यूनिटी हमें देखने को मिली नहीं है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें ऑपोजिशन यूनिटी की भी धज्जियां उड़ी हैं, जो आप बोल रहे हैं बीजेपी की उड़ी थी बंगाल में। और दूसरी बात, जब खिचड़ी बन जाती है, मोदी वर्सेस ऑल हो जाता है, तो हमने 2019 में भी देखा है, नहीं चला वो। देखिए, आप जो कह रही हैं, पहले उसके पहले मुझे इस पे रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। जो आपने कहा कि कितनी बार पलटी मारेंगे नीतीश बाबू, अगर ये करेंगे आप, तो ये भी कहना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल हमारे लीडर, हमारे फ्रेंड जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके तमाम लोग जो हैं, कितनी बार ये हरकतें करेंगे उनके लोग कि गोवा में सरकार खरीदेंगे बेचेंगे, कितनी बार करेंगे मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ेंगे और खरीदेंगे। आपको पता है, और मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता है कि इस बार बिहार में भी पैसे का खेल हो रहा था, रिकॉर्डिंग मिल चुकी है, उसमें 1-2 मंत्री भी शामिल हैं, मंत्रियों के नाम भी शायद हम में से बहुतों को पता है। अब ये इतना हो चुका है रिकॉर्डिंग। नीतीश बाबू बहुत मैच्योर्ड आदमी है। Right. ये खरीद बिक्री की दुकान या सो कॉल लोकतंत्र की हत्या कब तक होते रहेगी? तो प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री में डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, उनके लोग जो भी हों, ये लोग जब ये कहते हैं ऐसी बातें या करते हैं ऐसी बातें, तो वो ठीक है। और नीतीश बाबू ने अगर जनहित में, बिहार के हित में, और यहाँ चूंकि ज्यादा ऑप्शन नहीं है इसलिए अगर कुछ पलटी मारी, या ममता बनर्जी ने जब अपने खुंदक से और अपनी खुददारी से सामने आकर व्हील चेयर पर भी आके लोगों के परखच्चे उड़ा दिए, तो वो गलत है।
वाह, ये तो सही नहीं दिखता है ना मुझे। आप मेरी बात पे अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि मेरी नहीं, मैं बातों आपकी में बात रखती थोड़ा हूँ, सत्य भी है बट इस और थोड़ा खिचड़ी तथ्य से भी क्या है। सॉल्व हो जाएगा 2024 का मामला? मोदी वर्सेस ऑल हैजंट वर्कड। अरे खिचड़ी पे इस पे भी एक बात कह दूं, थोड़ा सा संक्षेप में ही कहूंगा। देखिए, खिचड़ी की जो बात की ना आपने, आज तक कोई पार्टी, जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हम खुद कैबिनेट मिनिस्टर थे और हमसे खुद अटल जी ने कहा था खुद कि नहीं, इतने लोगों को लेके हम नहीं चला पाएंगे सरकार, लेकिन चलाई, और क्या खूब चलाई। लोग उनके वक्त में कंसेंसस था, कॉन्फ्रंटेशन नहीं था। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में फादर फिगर, भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके वक्त में लोकशाही थी। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्त में बहुत लोगों को तानाशाही दिखाई पड़ रही है, अथॉरिटेरियन रूल दिखाई पड़ रहा है, और इसलिए जो है उनके अपने कितने लोग एलाइज जा चुके, तो वो भी तो बहुत सारे एलाइज के साथ सो कॉल्ड खिचड़ी के साथ ही सरकार चला रहे हैं वो। और जिस तरह एलाइज अगर कम हो गए, सब मिलके चलाया ना, मिलके कम हो गए, तो इसीलिए का कहीं ऐसा ना हो कि अंत में ये आ जाए कि मोदी है तो नामुमकिन है। चलिए, I leave it at that. Shatrughan Sinha, Bihari Babu, thanks a lot for joining us and giving us your take on the recent events in Bihar. Thank you. Thank you. I have to leave it at that. A big thanks to our guests for joining us earlier as well. We'll slip into a very short break. On the other side, a very special conversation also lined up.